Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to The Graphic Earth video. The Graphic Earth. The Graphic Earth is a fantastic channel. Highly recommend this channel. I've watched and reacted to several of their videos in the past. Again, highly recommend this one. Their most recent video, though, we have not watched or seen, so I'm going to be reacting to this one. POK and Aksai Chin, A Dream for India or a Future Reality, Geopolitics of Jammu and Kashmir. So, POK, it means the Pakistan-occupied Kashmir, and Aksai Chin, I don't know what that translates to, but that's the Chinese-occupied portion of Kashmir. So, in this video, I explained the geopolitical condition of POK and Aksai Chin. Do you know that currently around 3% of the area of sovereign India is actually not under control of India? Why Pakistan occupied Jammu and Kashmir, including Gilgit, Baltistan, and Chinese occupied Aksai Chin, are so important. Is there any possibility for India to get back these regions? Let's try to understand. I hope they can. I really hope they can. I am in full support of India in their claim on that territory, on that land, right? Uh, listen. I don't like the CCP. I've never been a big fan of the Pakistani government. Pakistan as a country, like it just seems, I don't know, doesn't seem all that great. Anyways, link to this video will be in the description down below. Make sure to go check it out. And yeah, without further ado, let's go ahead and watch it. We will be using subtitles of course, which is fine. I think these are official subtitles. Wow, he's got official English subtitles now. I remember back in the day, I was reacting. I had to read the Google translated subtitles, which didn't work very well. But if we're reading officially translated titles, this is fantastic. It's happy days for me, baby. Happy days for me. Anyways, let's go ahead and get it started. यह भारत का ऑफिशियल मैप मींस इन Yes, it बॉर्डर्स के is. अंदर का सारा हिस्सा ऑफिशियली सोवरेन इंडिया का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ में यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। फिलहाल जम्मू कश्मीर का करीबन 24% और लद्दाख का मैसिव Didn't yeah, like this portion right here, Pakistan gave to China, right? Just to stab India in the back a little bit more. 66% एरिया अभी भारत के कंट्रोल में नहीं है। पीओके यानी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर फिलहाल पाकिस्तान के मिलिट्री कंट्रोल के अंदर एक सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, यानी इस रीजन के पास अपना खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। So this okay, so interesting. That region still has that even after the whole Article 370 thing. Well, I guess it would be the case because Pakistan occupies it, right? और जब से भारत ने Yeah, and ever since India removed the special status. 2019 में फॉर्मर जम्मू कश्मीर स्टेट में आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी को रिमूव करके स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में रीऑर्गेनाइज किया है। तभी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख के नॉर्दर्न हिस्से यानी गिलगिट बाल्टिस्तान टेरिटरी को अपने 5th प्रोविंस का स्टेटस Oh, wow. Okay. So interesting. Pakistan's trying to make that the 5th province of Pakistan, even though technically it is India's territory. देने की प्लानिंग में है। हालांकि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये हिस्सा पिछले 76 इयर्स से पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इंडिपेंडेंस, पार्टीशन और फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वॉर के बाद से ही, जबकि ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी अक्साई चीन Aksai Chin. Yeah, okay, that's how you pronounce it. 1962 में सीनो इंडियन वॉर के बाद से चाइना के मिलिट्री ऑक्यूपेशन में है, जो अभी जिंजिया And that's not even just the only territory. I mean, that's the only territory that China is like currently occupying, but they're fighting over territory over in Arunachal Pradesh as well. I guess they claim it, right? But they're not occupying that region. And then they're like pushing in through Bhutan, and they've taken huge swaths of Bhutanese land, and they're trying to push towards the Siliguri corridor. It's like, come on. And then yeah, with the whole, I mean, China is just they want to rule the world. Anyways, free Hong Kong, free Tibet, Taiwan is its own country.
anyways, we'll keep और going. तिब्बत प्रोविंसेस के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है। लद्दाख में ही एक और डिस्प्यूटेड रीजन है साक्सगाम वैली, जो पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था एज अ पार्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, लेकिन Gilgit-Baltistan, that's how we pronounce it. Thank you. 1963 में पाकिस्तान ने अपने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और भारत के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बराबर इस डिस्प्यूटेड साक्ष So these are the actual names. Why is that such a different... Wait. Okay. I see. साक्सगाम वैली रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दिया ताकि वो चाइना से अपने there it was right there. साक्सगाम वैली रीजन को चाइना को गिफ्ट कर दिया ताकि वो चाइना से अपने Oh, they gave it to him in 1963. I didn't know it was that far back. रिलेशंस बेहतर बना सके। पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, अक्साई चीन और साक्सगाम वैली का टोटल एरिया ऑलमोस्ट 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मींस भारत का अराउंड 3% एरिया अभी भारत के कंट्रोल में नहीं है। नियरली सिमिलर एरिया इज द 10th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु। Wow, that's actually a lot. That's like the scale. That's a lot larger than I was expecting. It's nearly the area of Tamil Nadu. That's टोटल पॉपुलेशन wild to करीबन believe. 55 लाख से ज्यादा है That's a और lot यहाँ of के people सभी still. ओरिजिनल रेसिडेंट्स लीगली इंडियन सिटीजन्स Now, do they still have legal residency with India, or like what's up with that? भी है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पीओके के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 20 Oh. There are 24 seats ordinarily reserved for representatives of Pakistan-occupied Kashmir, but then they have these other 4 ones. सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है Oh, wait, this is the Jammu and Kashmir legislative. What? जो फिलहाल वैकेंट है। भारत अपने I understand. Okay, so this was from... Okay, this is for the entirety of Jammu and Kashmir. These are seats specifically for that region, right? के Okay. लिए 24 सीट इनफैक्ट जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव I असेंबली see. में I see. पीओके के रिप्रेजेंटेटिव्स I thought this was in like correlation to the occupied area, but now I understand. के लिए 24 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है जो फिलहाल वैकेंट है। भारत अपने स्टैंड पर vacant क्लियर even, है wow. कि फॉर्मर जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पूरा एरिया भारत का अभिन्न भाग है, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने लीगली भारत में मर्ज किया था। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट इंडिया के 76 ईयर्स के टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्प्यूटेड रीजन भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा है। इस रीजन की अपनी खुद की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स रही है। Very महाराजा complex हरि history. सिंह तो जम्मू कश्मीर को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री ही बनाना चाहते थे, लेकिन उनके खिलाफ उन्हीं के स्टेट में कुछ मुस्लिम मेजोरिटी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में What is this symbol for? Is this symbol like Buddhism? Is that what that symbol is? Or Confucianism? Let me look this up. I want to be accurate. I'm going to look it up really quick. It is Buddhism. Okay, that's what I thought. All right, that's Buddhism. पाकिस्तान सपोर्टेड रिबेलियन शुरू हुआ। इन रिवोल्ट्स के सपोर्ट में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लाखों पश्तून ट्राइबल्स ने Can I just say I'm loving these animations. The animation he really went into super big detail with the animations on this video. पाकिस्तान मिलिट्री की हेल्प से जम्मू कश्मीर को इन्वेट किया। महाराजा को भारत की मदद लेनी पड़ी जम्मू कश्मीर को ऑफिशियली इंडियन यूनियन में मर्ज करके। दिस लेड टू द फर्स्ट इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये वॉर 1 साल तक चली। भारत ने यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी गलती थी। यूएन के मीडिएशन से सीज फायर हुआ और टेम्पररी बॉर्डर बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद 1965 और 1999 में भी कश्मीर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इन 3 वॉर्स में लगभग 20,000 लोगों की डेथ हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ कई बार रिलीजियस और Apart from this, many religious and communal massacres have taken place. Well, there was a lot of like Hindu massacres, right? कम्युनल हिंसा हुई। सिविलियंस, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट और आर्मी पर्सनल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स में और कई हजारों लोगों की जान गई। अब जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड लद्दाख में तो ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ चाइना से बॉर्डर भारत के लिए अलग सिरदर्द रहा है। एक्चुअली 5000 मीटर ऊंचे हिमालयन टेरेन की वजह से भारत और चाइना के बीच फिक्स्ड फिजिकल फेंस्ड बॉर्डर है ही नहीं, और ना ही दोनों देश एक दूसरे की क्लेम्ड बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ लद्दाख में एवरेज What was that? और ना ही दोनों देश एक Neither do the two countries recognize each other's claimed borders. Yeah. दूसरे की क्लेम्ड बॉर्डर्स को Now again, I think these borders, there's this border issue here was also thanks to the British as well.
रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ लद्दाख में एवरेज 6000 मीटर ऊंची और 500 किलोमीटर लंबी काराकोरम रेंज अक्साई चीन को Karakoram रेस्ट ऑफ Range. लद्दाख से अलग करती है। ये माउंटेन रेंज पोलर रीजन्स के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स वाली जगह है, जहाँ पूरे साल टेम्परेचर माइनस I mean, this is very beautiful. That's one thing about Jammu and Kashmir, Ladakh as well. The whole territory up there is it's surprisingly beautiful. I run, of course, self plug. I run a Geoguessr channel, right? I used to do geoguessing on this channel. I've now separated the geoguessing onto its own separate channel. But there's no official Geoguessr like Google Street View coverage up in Jammu and Kashmir, but there are like fan made like photospheres, and I've gone through and I've plopped into a couple of them, and man, absolutely stunning and beautiful. Probably one of the most beautiful places I've seen in the whole world. में रहता है। एंड इसी एक्सट्रीम माउंटेन की वजह से भारत के लिए अक्साई चीन तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू चाइना। वैसे अक्साई चीन खुद दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट Like, look at this. This is stunning, isn't it? रिमोट अनहेबिटेबल प्लेसेस में से एक है। इसका एरिया करीबन भूटान के एरिया जितना है। अब भूटान खुद हिमालयन कंट्री होने के कारण वन ऑफ द स्पार्सली पॉपुलेटेड देशों में से एक है, लेकिन फिर भी भूटान की पॉपुलेशन 7.8 लाख तो That's it. That's it for Bhutan, really? है, जबकि यहाँ अक्साई चीन की पॉपुलेशन सिर्फ 1000 इनहेबिटेंट्स के करीब ही है। 1962 की 1,000 inhabitants? अक्साई चीन की पॉपुलेशन सिर्फ 1,000 inhabitants? Now, how many of these are like military personnel? Because that's one thing that China likes to do is they like to take over land or sneak into and slowly build up like these like quick villages and put military units in there, and then they bring their like the military troops, they bring their family and put them in there and say, oh, well, we got people living here, we got citizens living here, what are you gonna do about it? We have citizens here, come on, these are citizens, you can't do anything about it. That's what China likes to do. सिर्फ 1000 इनहेबिटेंट्स के करीब ही है। 1962 की सीनो इंडियन वॉर के बाद यहाँ चाइना का मिलिट्री कंट्रोल हुआ, लेकिन एक्चुअली 1950s में चाइना के तिब्बत और जिंजियान को एनेक्स करने के बाद से ही यहाँ चाइना का फिजिकल प्रेजेंस शुरू हो गया था। East Turkestan, and now it's the Xinjiang territory, where they're again, I've said this in the last video. I'll say it again in this video. No one talks about the Uyghurs. Everyone's always up in arms about when there's like conflict with in Gaza, right? No one talks about the Uyghurs who are getting completely wiped out by the Han Chinese. था। इनफैक्ट 1950 में ही चाइना ने इन दो नए ऑक्यूपाइड रीजन्स को जोड़ती 1200 किलोमीटर लंबी मिलिट्री रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। Oh, then yeah, they built the road through Aksai Chin as well. And then this road like diverts and is starting to go through the POK area too, right? Like it goes through the POK into Pakistan. था, जिसमें से 179 किलोमीटर अक्साई चीन से पास होता है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी भारत को छेक 1957 में इस रोड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, और यही वन ऑफ द मेन ट्रिगर पॉइंट था 1962 के सीनो इंडियन वॉर का। वैसे रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, भारत ने ऑलवेज जम्मू कश्मीर के इन ऑक्यूपाइड रीजन्स पर क्लेम किया है, लेकिन रिसेंटली भारत के कई लीडर्स ने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हैं पीओके और अक्साई चीन के लिबरेशन से रिलेटेड। तो क्या भारत सच में इन ऑक्यूपाइड रीजन्स को लिबरेट करके उन्हें फिर से भारत में मर्ज करने की प्लानिंग में है? इज इट इवन पॉसिबल? जानेंगे कि कैसे अब पीओके चाइना के and then here's this. Yeah, this is that road there, right? ये उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना वो पाकिस्तान के लिए है, और पाकिस्तान पहले ही चाइना का अलाय है, तो जम्मू कश्मीर के किसी भी पार्ट में वॉर भारत के लिए इजीली What India needs to get a very strong ally on their back to help push back against this. So if they were to go to war with China and Pakistan again, they would have this super strong ally. Now here's the thing, who would that be, right? I mean, you can go in and try to get alignment with there's an alignment with USA, Japan, and Australia, right? With something with like the Pacific. Probably try to back into that and say, hey, I want to join this group. But then at the same time, India is part of BRICS, which is so they're allies with China. It's man, geopolitics is it's so many, like
it's so there's so many twists, turns. It's so like it intertwined and flared out. It's crazy. एक टू फ्रंट वॉर बन जाएगी। क्या इस रीजन की कोई इंपॉर्टेंस भी है कि इसके लिए भारत दो न्यूक्लियर पावर देशों से टक्कर ले? इज इट इवन वर्थ इट? और अगर भारत युद्ध करे भी तो इसका क्या परिणाम आ सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया। We haven't even started the video. That was just the intro. अब हम में से कईयों को लगे कि भारत को आखिर क्या जरूरत है इस मोस्टली अनइनहेबिटेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले माउंटेनियस रीजन पर इतना फोकस करने की, जिसकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट बेलगावी की पॉपुलेशन के बराबर है और उसकी जीडीपी तो बेलगावी से नियरली आधी है। भारत एनुअली 75 बिलियन। Well, yeah, the GDP is going to be pretty low. I mean, look, how exactly are they going to make it to, like, what's the product that they can get out of this area to have an increased GDP, especially when it's like occupied by foreign territory as well, right? And Pakistan's, currency is like, is hit rock bottom, right? Like the value of the Pakistani rupee is like nothing. $1 अपने डिफेंस सेक्टर पर स्पेंड करता है, जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की कंबाइंड जीडीपी के बराबर है। By billion they mean Indian rupees, right? ऑब्वियसली इस डिफेंस स्पेंडिंग का सिग्निफिकेंट हिस्सा जम्मू कश्मीर में स्पेंड होता है और ऐसा पिछले 7 दशक से होता आ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी अपने डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ खर्च करते आए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन को ध्यान से देखें तो ये एशिया के मध्य में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर लिटरली एक जंक्शन रहा है। जो Is it a junction because there's pathways through this giant mountain range? So this is actually like, yeah, that's the thing, right? That there exist pathways here through the mountain ranges. So this is actually how, like, I guess, the Silk Road. I don't know the path of the Silk Road. I thought the Silk Road ran through like mainland India. Well, I guess that is mainland India, right? But I don't know its pathway. But yeah, I guess that's the case, right? Well, because there's even like a historical holiday or like migration of like is it Hindus that go up here as well? I'm sorry, I don't know enough. I do apologize. ईस्ट एशिया को मिडल ईस्ट से और साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया और यूरोप से जोड़ता था। आज से 3000 से 4000 साल पहले अफ्रो यूरेशियन लैंडमास पर वास्ट इंटरलिंक्ड जिसे सिल्क रूट्स कहा जाता था। ये बेसिकली एशिया को लैंड रूट द्वारा यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से कनेक्ट करता था। इन रूट्स पर सिल्क, डिफरेंट फैब्रिक्स, परफ्यूम, स्पाइसेस, मेडिसिन और ज्वेलरी की ट्रेड होती थी। ग्रेटर कश्मीर 3 रूट्स द्वारा इस सिल्क रोड नेटवर्क से कनेक्टेड था। एक रूट था लद्दाख के नुब्रा वैली से होते हुए काराकोरम पास के थ्रू होतान तक। सेकंड रूट था गुरेज से गिलगिट होते हुए यारकांड और काशघर तक। और थर्ड रूट था बारामूला से मुजफ्फराबाद होते हुए थ्रू झेलम वैली रोड। दिल्ली से तक्षशिला और काबुल वाले रूट के साथ कश्मीर के ये ट्रांस लद्दाख और ट्रांस गिलगिट रूट। That's really cool. This is really cool right here. I didn't know any of this. That must have been an interesting time. That really must have been. ट्रांस लद्दाख और ट्रांस गिलगिट रूट एडिशनल सप्लीमेंट सब रूट्स की तरह काम करते थे। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन एंड रिजिड बॉर्डर्स बनने के चलते again, I mean, we wouldn't be having these conflicts, right? If the British weren't so bad at making borders when they left a territory. They do that with every country. Every country they've left, they've always just flubbed and messed up the borders. फ्रूट्स ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट परमानेंटली बंद हो गए हैं। ये रूट स्ट्रेटेजिकली आज भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं और अगर इन्हें फिर से डेवलप करके एफिशिएंटली यूज किया जाए तो ये पूरे रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। Oh yeah, I bet, because you'd get right up into here, yeah. But right now, because it's a conflict zone, then it's hard to get anything through it. कश्मीर की करंट जियोग्राफी और फिजिकल बॉर्डर्स को देखे तो या तो ये भारत को अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है या तो पाकिस्तान को चाइना से। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण दोनों रूट्स को एक साथ ऑपरेट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। गिलगिट बाल्टिस्तान के ऑक्यूपाइड होने के कारण भारत को सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचने के लिए दूसरे आर्टिफिशियल रूट्स बनाने पड़ रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज, आज कनेक्टिविटी इश्यूज के कारण भारत का सेंट्रल एशिया से ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $2 बिलियन ही है, जबकि बिकॉज ऑफ द सेम गुड कनेक्टिविटी चाइना का सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड वॉल्यूम भारत के कंपेयर में 50 गुना ज्यादा यानी $100 बिलियन है। सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लैंडलॉक्ड है।
तो उन्हें भारत से ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के खराब रिलेशंस के कारण इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। तो भारत को सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए ईरान वाला रूट लेना पड़ता है। इस रूट को डेवलप करने के लिए भारत ने ईरान के साथ गल्फ Speaking of Iran, there was recent news where two members of the Iranian Supreme Court were assassinated by their bodyguard. That came out today. I put it on my to-do list to read it later in the day when I'm sitting down and enjoying a cup of coffee. Right, morbid thing to read about, but news about that. Let me make sure I'm not spreading fake news. Hold on. Yes, two judges on the Supreme Court of Iran have just been shot and killed. Ali Razini and Mohammad Moghisi were killed in front of the Supreme Court building in Tehran by a guard who had enough of the Islamist dictatorship. Both judges were hardliners known as hangmen. All right, well, there we go. ऑफ ओमान में मौजूद चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंडर भारत 120 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से पोर्ट के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल को डेवलप करेगा। पोर्ट से 2 कार्गो रूट तैयार किए जाएंगे। एक चाबहार से झारंज होते हुए अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया एंटर होगा और दूसरा रूट अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए चाबहार से सीधा तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद होते हुए सेंट्रल एशिया जाएगा। सेंट्रल एशिया नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है। 10 to 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के साथ तुर्कमेनिस्तान के पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। वहीं कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां दुनिया का Really? I didn't know that Kazakhstan was the largest uranium producing country. That's really interesting. I didn't know that. 12% यूरेनियम रिजर्व मौजूद। And the Soviet Union just gave that up. I mean, they didn't have any choice. The Soviet Union collapsed, right? But like that whole territory is just gone from the Soviet Union now, because all this was Soviet Union, right? Like all the way down to here and to here. Yeah, was Turkmenistan? No, I don't know. I would have to look at older maps. है। जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, भारत को इन नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जबकि भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन, टी, कॉफी, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की सेंट्रल एशियन Yeah, if they overtook the territory, if they took the territory back, they could, well, I mean, they'd still have to go through like this little bit of Pakistan here, right? So even then there'd be contention. They would have to push in and take like this Pakistani corridor here. If they really truly wanted this connection that he's talking about, they would have to take this corridor. So it's not even just a war of taking back the occupied territory. It would be a war to overtake and occupy parts of Pakistan. कंट्रीज में हाई डिमांड है। सेंट्रल एशिया का बिग नेबर रशिया रिसेंटली भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर बन के उभरा है, स्पेशली आफ्टर रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। भारत ने एंटी रशियन स्टैंस नहीं अपनाया। India actually just said no to some of the Russian oil ships coming in because the US put sanctions on them. और रशिया से ट्रेड जारी रखी। दोनों देशों की ट्रेड वॉल्यूम 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान है। अब इसके लिए रशिया से भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। फिलहाल भारत की रशिया से ट्रेड मोस्टली मैरीटाइम रूट से होती है, लेकिन ये रूट बहुत लंबा और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए भारत रशिया के साथ मिलकर 7200 किलोमीटर लंबा शिप, रेल और रोड का मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना रहा है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रूट भारत से चाबहार पोर्ट, फिर तेहरान से होते हुए कास्पियन सी क्रॉस करके अस्ट्राखान होते हुए मॉस्को तक Isn't the Caspian Sea shrinking too? So that could be a bit of an issue. जाएगा। वैसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तापी गैस प्रोजेक्ट, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $10 बिलियन की है और इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में ही शुरू हो गया था। बट इसकी प्रोग्रेस बहुत ही धीमी रही है। प्रोजेक्ट को कई बार रिपीटेडली डिले किया गया है। कंट्रीज के बीच डिसएग्रीमेंट्स, जियोपॉलिटिकल I was going to say, how did any of these countries agree to this without having disagreements? But yeah, of course they've had disagreements. टेंशन और अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी के कारण ईरान पर इकोनॉमिक And isn't this area of Pakistan right now currently facing a lot of
terrorism activities like that are going in and attacking like Pakistani cities and stuff. I'm pretty sure it was this area, right? Right around the contentious pipeline. सैंक्शंस, एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट और मिडल ईस्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशन पर असर डाल सकता है। भारत अपनी कनेक्टिविटी के लिए कम्प्लीटली इन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। भारत को इस पूरे गेम को अपने फेवर में लाने के लिए एक ही रास्ता बचता है, गिलगिट बाल्टिस्तान पर फिर से। Oh wait, what is this? Is this not an arm? I thought Pakistan was fully connected to China here. Is that not the case? Is this Afghanistan then? This corridor is Afghanistan? So they would have okay. से अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना, इससे ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान Yeah, okay. So the corridor is Afghanistan. I see. So they would have to go through this corridor right here, which also China has built a road along this corridor into Afghanistan as well. लैंड कनेक्शन टूट जाएगा, बल्कि भारत रेल, रोड और पाइपलाइन द्वारा श्रीनगर और कारगिल से स्कार्दू, गिलगिट होते हुए इरशाद पास से They would go on. That's literally the road that China built. अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक डायरेक्टली पहुंच सकेगा। ट्रेड शुरू होते ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की इकोनॉमी बूम होगी और ये वैसे ही ट्रेडिंग सेंटर बन जाएंगे जैसे सिल्क रूट्स के टाइम पर थे। बट प्रैक्टिकली ये सब करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से ही पास होता है। चाइना $62 बिलियन के बजट से जिंगजियान प्रोविंस के Now, is that 62 billion Indian rupees? I'm assuming he's saying these things in Indian rupee money. पाकिस्तान के ग्वादर तक ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर लंबा रोड, रेल और पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा रहा है। चाइना के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट उसे ट्रेड के लिए एक शॉर्टर रूट प्रोवाइड करेगा। They're doing this to get past the Malacca Strait. I think it's called the Malacca Strait. Starts with an M. Oh yeah, no, they literally have it written right here. Yeah, it's to bypass the Malacca Strait, because if you want to inhibit China in a possible conflict war, you would want to stop trade. And the best way to stop the trade is here in the Malacca Strait. And actually, on this side of the Malacca Strait, I believe there is a U.S. military base, and on this side, it's an Indian military base as well, or it could be flip-flopped. Either way, there are foreign bases in this area that would be a direct contention against China. ताकि वो मलाक्का स्ट्रेट पर से अपना डिपेंडेंस कम कर सके। Oh, he even said Malacca Strait up here. I didn't read that. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट द्वारा चाइना जिंगजियान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वहां की सेपरेटिस्ट Over 1 million Uyghurs something arbitrarily detained in China. UN must speak up. Exactly. That's what I'm saying, man. No one's talking about the Uyghurs. Everyone's talking about, oh, there's a genocide going on in Gaza. The Palestinians are being genocided. They're being killed. Literally, the Uyghurs are being locked up, disappeared, put into camps. Nobody's talking about it. And it's been going on for years. मूवमेंट्स को कंट्रोल में लाना चाहता है। इवन पाकिस्तान के खुद के लिए भी सीपीईसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनकर उभरा है। पाकिस्तान में 1970 से अब तक जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे ज्यादा तो चाइना ने सिर्फ कुछ सालों में पाकिस्तान में सीपीईसी के अंडर कर दिया है। एस्टिमेशन है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में टोटल 23 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा। All this, and I want to say, like, Pakistan's economy is at the lowest it's been. Right? Let me look it up. Pakistan rupee to USD 0.0036 max. It's just been a downward trajectory. In the past 5 years, it's cut in half, basically, its value. The Pakistani rupee has been cut in half. That's crazy. इसी के अंडर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आज पाकिस्तान की 1/4 and yet they're having all these economic, this, like,
I don't understand. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। तो देयर इज नो वे कि पाकिस्तान और चाइना किसी भी हालत में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने हाथों से इजीली जाने दे। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में कई कीमती मिनरल रिसोर्सेज लाइक जेमस्टोन्स, मार्बल्स और स्पेसिफिकली गोल्ड रिजर्व भी है। गिलगिट बाल्टिस्तान की लगभग सभी रिवर वैलीज में गोल्ड gold रिजर्व from the है और rivers, फिलहाल from the पाकिस्तान का mountains? 70% प्रेशियस स्टोन्स भी अकेला गिलगिट बाल्टिस्तान। Really? Interesting. Now, aren't these like precious stones like prayed over and like given to people to like ward away like bad spirits and whatnot? Not necessarily spirits, but like they're like prayed over and like given to people to for like religious purposes. ही प्रोड्यूस करता है और यहाँ के वाटर रिसोर्स और हाइड्रो पावर पोटेंशियल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु नदी का 70% वाटर फ्लो गिलगिट बाल्टिस्तान के ग्लेशियर्स ही प्रोवाइड करते हैं। कहा जाता है कि फ्यूचर में ज्यादातर वॉर्स पानी के लिए होंगी, तो किसी भी कंट्री के लिए इस रीजन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाता है। अब हाँ, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस अनइनहेबिटेबल अक्साई चीन, जिसके लिए दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज लड़ने को तैयार है फिर से। जैसे कि हमने Here's a question before we get into this Aksai Chin conflict, right? What if India proposed purchasing back the occupied territory? Now I know it's strange to say, "Hey, I want to buy my own land back," but to avoid future military conflicts, what if India was like, "Hey, let me spend, so and so $1 billion on, purchasing this territory." I'm just saying, like, to avoid the loss of life or huge militaristic conflict, because if it wouldn't just end here, right? It would go all along the entire border of Pakistan, right? I don't know. पहले बात की, चाइना का हाईवे नंबर 219 यहाँ से पास होता है। ये हाईवे बेसिकली चाइना के 2 सबसे ज्यादा रिबेलियस प्रोविंसेस तिब्बत और जिंजियान को आपस में कनेक्ट करता है, जिस पर पूरे साल ट्रैवल किया जा सकता है। इस हाईवे के अलावा एक और कनेक्शन है तकलामकान डेजर्ट को लगकर G315 हाईवे, लेकिन इस रूट पर लासा से काशगर जाने के लिए 2-3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है हाईवे 219 के कंपेयर में, और ये रूट विंटर में पार करना मुश्किल। This is a wild road. How do you maintain this road? How do the dunes not just take it? मुश्किल हो जाता है। हाईवे 219 बॉर्डर के करीब होने के कारण ये चाइना के बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ने 2010 में वेस्टर्न कुनलुन रीजन में जियोलॉजिकल सर्वे करवाया था, जहां उन्हें मेजर जिंक के रिसोर्स मिले हैं। 2017 में यहाँ माइनिंग शुरू हुई थी। जिंक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग zinc is very important for computers and CPU processing chips. में एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। सो वी कैन इमेजिन कि आगे टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल फ्यूचर में ये रिजर्व दोनों ही देशों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी के लिए यहाँ चाइना का एग्रेशन और बढ़ा है। अक्साई चीन हिस्टोरिकली हमेशा से ही ग्रेटर लद्दाख का पार्ट रहा है। भारत यहाँ अपने क्लेम से पीछे हटकर चाइना का एग्रेशन या कोई भी कॉम्प्रोमाइज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये काइंड ऑफ डोमिनेशन और सॉवरेनिटी की बात है। एशिया में सिर्फ भारत ही है जो चाइना से कम्पीट करने का पोटेंशियल रखता है, और चाइना भी भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर मानता है। अक्साई चीन बॉर्डर से दिल्ली का डिस्टेंस मात्र 700 किलोमीटर के आसपास है। वॉर जैसी सिचुएशन में चाइनीज आर्मी विद इन फ्यू आवर्स भारत के कैपिटल और हार्टलैंड तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत अक्साई चीन के इशू को हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन आखिर क्या इस डिस्प्यूट का कभी सॉल्यूशन निकलेगा भी? पूरे इशू को सिंप्लीफाइड करे तो इसके सिर्फ 3 ही सॉल्यूशंस है। फर्स्ट, सबसे पीसफुल लेकिन वीक सॉल्यूशन है डिप्लोमेटिक डायलॉग और बात। Peaceful but weak solution? I mean, money talks, right? Just offer them a ton of money. तीनों देशों को साथ मिलकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन लॉजिकली सोचे तो देशों के बीच कितनी भी बातचीत करा लो, ज्यादा से ज्यादा यही सॉल्यूशन निकल सकता है कि अभी जो करंट बॉर्डर्स है LOC और LAC। Oh, LOC, Ladakh occupied, China. Okay.
में ही परमानेंट बॉर्डर्स घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इस रीजन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आखिर क्यों कोई भी देश अपने ऑलरेडी कंट्रोल्ड एरिया को दूसरे देश को ऐसे ही सौंप दे। सभी देशों को कुछ ना कुछ खोना होगा अगर पीसफुल सॉल्यूशन निकालना हो तो। अब सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में हम कई बार भूल जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर वांट्स। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर की आवाज अब यूनाइटेड नहीं रही है और उनके अलग अलग ओपिनियंस है जम्मू कश्मीर के इशू के सॉल्यूशंस के लिए। ये ओपिनियंस उनकी अलग अलग इथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। फिलहाल भारत के एडमिनिस्ट्रेशन वाला जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी है विद 68% सुन्नी मुस्लिम, लेकिन 4 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में हिंदू मेजोरिटी है और 2 डिस्ट्रिक्ट्स रायसी और डोडा में हिंदू और मुस्लिम ऑलमोस्ट इक्वल है। इनके बीच सिग्निफिकेंट गुज्जर और पहाड़ी कम्युनिटीज है। जम्मू ने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी को कश्मीर से अलग रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मोस्टली जम्मू डोगरास और कश्मीरी पीपल्स एक ही स्टेट में होने के बावजूद एक दूसरे की सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पाते। पीपल्स एक ही स्टेट में होने के बावजूद एक दूसरे की सिचुएशन The Modi mask. That's funny. That's very funny. से रिलेट नहीं कर पाते। लद्दाख के फॉर्मर 2 डिस्ट्रिक्ट्स कारगिल और लेह की डेमोग्राफी भी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। कारगिल कश्मीर की तरह मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन जहां कश्मीर सुन्नी है, मोस्ट ऑफ कारगिल मिक्स है विद शिया बाल्टी मुस्लिम मेजोरिटी, जिनकी इथनिसिटी और कल्चर बाल्टिस्तान, लेह और तिब्बत से रिलेटेड है। लेह कारगिल से कल्चरली सिमिलर है, लेकिन अगेन लेह बुद्धिस्ट मेजोरिटी है। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आजाद कश्मीर के सिर्फ नाम में ही कश्मीर है, जहाँ कश्मीरी स्पीकर There's so many denominations, religious denominations. How does anybody keep up with it? 5% ही है। एजेके की मेजोरिटी पॉपुलेशन पहाड़ी पोथवारी सुन्नी मुस्लिम है विद सिग्निफिकेंट गोजरी पॉपुलेशन। अब ये इस साइड के कश्मीरी की तरह सुन्नी मुस्लिम तो है, लेकिन कल्चरली दे आर नो वे रिलेटेड टू कश्मीर। पोथवारी कम्युनिटी जम्मू के डोगरास और नेबरिंग पंजाबी से ज्यादा रिलेटेड है। गिलगिट बाल्टिस्तान अगेन आजाद कश्मीर से कम्प्लीटली अलग है। एजेके जहाँ सुन्नी है, गिलगिट बाल्टिस्तान मेजरली बाल्टी शिया मुस्लिम है विद सिग्निफिकेंट शीना सुन्नी मुस्लिम और वाखी बुरुश और खो इस्माइली पॉपुलेशन। ये रीजन कल्चरली लद्दाख से ज्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू एनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान भी खुद को आजाद कश्मीर से कभी रिलेट नहीं कर पाया है। इस पूरी खिचड़ी में मल्टीपल वॉइस, मल्टीपल ओपिनियंस और मल्टीपल डिमांड्स है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेकंड ऑप्शन है भारत के लिए फुल स्केल 2 फ्रंट वॉर। अब ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी देश जेन्युइनली यहाँ वॉर नहीं। And it wouldn't just be a war in this section here. It'd be a war all along the Pakistani border. It'd be a war near the Siliguri corridor. It'd be a war in Arunachal Pradesh. It's not even just in this area. It'd be all over. And then, with how tensions are going, how things are going, how the demographics going, Bangladesh, what are they going to do in this situation? Who would they side with? It's like, नहीं चाहता। चाइना या पाकिस्तान से कोई भी फुल स्केल वॉर भारत को इकोनॉमिकली एटलीस्ट 20 साल पीछे धकेल सकती है और सिमिलर अमाउंट में नुकसान पाकिस्तान और चाइना को भी होगा। युद्ध के कई नुकसान है, लेकिन ये जानते हुए भी फिलहाल दुनिया में मल्टीपल वॉर्स चल ही रही है, इसलिए कश्मीर में भी सीरियस सिचुएशन कभी भी बन सकती है। चलिए इन देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया है। करंटली भारत की मिलिट्री दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन चाइना भारत से आगे है 3रे स्थान पर, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 9th है। भारत में फिलहाल Pakistan's the 9th quote unquote strongest military in the world. भारत से आगे है 3रे स्थान पर, जबकि How is Pakistan the 9th strongest military in the world? Strange, very strange. पाकिस्तान की रैंकिंग 9th है। भारत में फिलहाल 14 लाख एक्टिव और 11 लाख रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल्स है, यानी टोटल 25 लाख, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव, 5.5 लाख रिजर्व्ड यानी 12 लाख और चाइना के पास 20 लाख एक्टिव, 5.1 लाख रिजर्व यानी अगेन 25 लाख। That's it? That's it? Really?
I thought China would have a lot more. चाइना के कंबाइंड मिलिट्री पर्सनल 37 लाख हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली हायर देन इंडिया। भारत का एनुअल मिलिट्री बजट 74 बिलियन यूएस डॉलर्स है, Oh, it is US dollars. जबकि Okay. पाकिस्तान का 6 बिलियन डॉलर्स और चाइना का तो भारत से 3 गुना ज्यादा How 227 how does okay. बिलियन डॉलर्स है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और एरिया भी ज्यादा है, तो बजट भी हाई होना अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन फिर ये भी दर्शाता है कि चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्वालिटी और एडवांसमेंट भी शायद भारत से ज्यादा होगी, क्योंकि मिलिट्री बजट डायरेक्टली ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, हथियार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्वालिटी से लिंक्ड है। भारत के पास 4600 टैंक्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 3700 और चाइना के पास 5000 टैंक्स है। भारत के पास 1.5 लाख आर्नोल्ड व्हीकल्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 50,000 और चाइना के पास 1.7 लाख आर्नोल्ड व्हीकल्स है। भारत के पास 4000 के करीब आर्टिलरीज है, जबकि So essentially, पाकिस्तान what के he पास what he's saying ऑलमोस्ट here is 4000 if you combine the numbers, it's not looking good. 600 और चाइना के पास 8400 आर्टिलरीज है। एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास ऑलमोस्ट 2300 टोटल एयरक्राफ्ट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 1400 और चाइना के पास 3300 एयर। The numbers for these aircrafts are a bit. I would say like the numbers for aircrafts right now probably don't matter too much because China supposedly has a next generation fighter, which if they have these next generation fighters, then these the last, or I guess the current generation fighter wouldn't be able to compete with it, right? If what they say is true, you gotta try to get past the propaganda push from China. एयरक्राफ्ट है। नेवी में भारत के पास 296 टोटल नावल एसेट्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 114 और चाइना के पास 730 नावल एसेट्स Wow. है। एज एक्सपेक्टेड भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से सिग्निफिकेंटली बेहतर है, लेकिन चाइना से लगभग हर He's मामले में ranking them इंडियन with मिलिट्री stars. पीछे है। हालांकि किसी भी वॉर में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। कमजोर पार्टी भी टफ फाइट देकर बाजी पलट सकती है। I mean, yeah, अपनी the prime strategy example, से। the और prime इसके example कई of this is I like how he's using like all these movie theater, like this is Battlefield LA. But yeah, like of course the weaker quote unquote weaker military could, and in many cases have stopped the stronger military. Just look at Ukraine, right? Ukraine, not only have they started pushing back against Russia, they're even attacking like mainland Russia assets, right? उदाहरण मौजूद है। ऊपर से हिमालयास में वॉर करना Oh, yeah. रशिया यूक्रेन के मैदान या इजराइल गाजा के रेगिस्तान में वॉर करने से बहुत अलग है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान, इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज भारत के मेजर अलायंस कंसीडर किए जाते हैं। चाइना के साथ फेस ऑफ में अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली भारत का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रीज भी क्या ही कर लेंगी। कहीं पर भी वॉर सुपर पावर कंट्रीज के लिए एक बिजनेस का माध्यम है, ये हम कई बार देख चुके हैं। ऊपर से इन सभी देशों के चाइना से मजबूत ट्रेड रिलेशंस है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में रशिया मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही They would most likely remain neutral because if Russia were to step in and help India, China would probably go in and attack Russia to get this portion of the land back, because this portion over here was once Chinese. Well, yeah, this portion was once technically, I guess, Chinese territory, right? And now Russia inhabits it. So, I mean, if Russia ever turned their back on China, which I highly doubt they would, China would probably use that as a means to get this territory over here. रशिया के बड़े और इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है। एंड डोंट फॉरगेट द न्यूक्लियर वेपन्स। तीनों Yeah. देशों के पास Well, okay, when it comes to nuclear weapons, people always think, okay, wow, there's been, 2 nuclear attacks in history, right? The US attacked Japan with nuclear weapons in World War II. There have been hundreds, thousands of nuclear tests all throughout the world, right? So it's not like if I mean, God, I hate to say this. Like if a couple nukes dropped, it's not going to be the end of the world. It would be devastating, right, for the people that whoever where it was dropped on, which we would never. That's why we don't want a nuclear conflict, because it would kill pretty much any city that it got launched at. But as far as like nuclear winter, nuclear fallout, the world's going to end. That wouldn't happen. I mean, the nuclear God.
if anybody launched any nuclear weapons, God, is there any means of stopping a nuclear missile launch? You'd have to intercept it midair, and then at that point, if you destroy it in the air, it's still going to explode, and you'd have radiation debris, radiation cloud. You'd have to worry about like the radiation traversing, sickening and weakening the people. I don't even know. I don't even know. A nuclear war sounds absolutely terrifying, and I don't think anybody anybody else, now that so many people have nukes, I don't think anybody would launch a nuclear weapon. न्यूक्लियर वेपन्स है। अब भारत और चाइना ने तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है, यानी वो कभी भी इनका उपयोग फर्स्ट नहीं करेंगे, तभी करेंगे अगर उन पर पहले किसी देश द्वारा न्यूक्लियर हमला हो। लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी पॉलिसी में नहीं मानता। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। रुटगर्स यूनिवर्सिटी की स्टडी में एस्टिमेट किया गया है कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान 150 और भारत 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करे एक दूसरे पर, तो इसके डायरेक्ट इफेक्ट से 5 से 12 करोड़ लोगों की जान जा सकती है और इसके अगले कुछ महीनों में और 4 से 5 करोड़ लोगों की जान जाएगी स्टार्वेशन और रेडिएशन से। इसका क्लाइमेटिक असर सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट या एशिया पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर होगा। इससे रिकवर होने में भारत को दशकों का टाइम लगेगा। लाखों करोड़ों की कैजुअलिटीज के बाद अगर भारत जीता तो फिर से पूरे जम्मू कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन होगा? क्योंकि इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को देखे तो ऐसा तो नहीं होगा कि चाइना और पाकिस्तान हमेशा के लिए हार मान ले। वो फिर से इन रीजन्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे ही और फिर से वॉर होगी। ऊपर से ये क्वेश्चन है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग क्या भारत को सपोर्ट करेंगे? विदाउट उनका सपोर्ट इस रीजन पर कंट्रोल रख पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा। इन सब को देखते हुए लास्ट सॉल्यूशन बचता है जिसमें बिना किसी वॉर के ये usurping using the locals to usurp the occupied forces. That's funny. Yeah, I guess that is a solution. That for sure is a solution. खुद ही भारत में शामिल हो जाए। जैसे हमने बात की कि भारत को जब तक पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से फुल लोकल सपोर्ट नहीं मिलता तब तक भारत अपने मिशन में फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। भारत को ट्राई करना होगा उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए। डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को देख के ये बहुत मुश्किल लगता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कंडीशन पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से बहुत बेहतर है। आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.592 and 0.579 That's pretty low. That's really low. है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर का HDI सिग्निफिकेंटली हायर देन दोस रीजन। 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद न सिर्फ यहाँ टेरर एक्टिविटीज में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ बल्कि पिछले सिर्फ 5 सालों में अब तक जम्मू कश्मीर के लिए 99,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। स्टेट धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते जा रहा है जो स्लोली पास्ट की परेशानी और इनजस्टिस को ब्राइट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर में बदल देगा। ऑन दी अदर हैंड पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में सिर्फ सीपीईसी प्रोजेक्ट के अंडर इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसे भी वहां कई बार लोकली अपोज किया गया है। सीपीईसी प्रोजेक्ट का गिलगिट बाल्टिस्तान की इकोलॉजी और that's also one thing when China goes through and does these big construction sites or projects. They don't care about the economy. They don't care about the local ecology. That's the word. They cut through the land, whatever it may be, right? They cut through cities, they cut through little villages, they cut through mountains, they cut and destroy rivers. They don't care. एनवायरमेंट पर बुरा असर हो रहा है विथ मिनिमम बेनिफिट्स टू लोकल पीपल। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों का स्टेटस कंफ्यूजिंग रहा है। उनका पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिकल अफेयर्स में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। उन्हें वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और राइट्स नहीं मिल पाते जो पाकिस्तान के दूसरे ऑफिशियल प्रोविंसेस को मिलते हैं। पाकिस्तान का 44% हाइड्रो पावर अकेला आजाद कश्मीर प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी यहाँ कई बार पावर शॉर्टेज होती है क्योंकि हाइड्रो पावर का पूरा बेनिफिट सिर्फ पंजाब को ही मिलता है। सिमिलरली गिलगिट बाल्टिस्तान के ट्रेड ट्रांजिट, वाटर रिसोर्स, इको टूरिज्म और मिनरल रिसोर्सेज से इस्लामाबाद गवर्नमेंट हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन इसका नेग्लिजिबल शेयर गिलगिट बाल्टिस्तान को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। It sounds like the exact same thing that happened in East Pakistan
And that's what led to them wanting to rebel and make, Bangladesh. अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए भारत उनकी वॉइस बन सकता है और यहाँ के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट को प्रमोट कर उन्हें इनवाइट कर सकता है टू कंसीडर ज्वाइनिंग इंडिया। अब अक्साई चीन और साक्सगाम वैली में तो नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है, तो यहाँ ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसके लिए भारत को डायरेक्ट तिब्बत और जिंगजियान यानी ईस्ट तुर्किस्तान के इंडिपेंडेंस पर फोकस करना होगा और उसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना होगा। ये दोनों रीजन चाइना ने 1950s में एनेक्स किए थे और यहाँ अभी भी स्वतंत्रता की आवाजें उठती है। अगर ये दोनों रीजन सेपरेट हो गए तो भारत की चाइना से बॉर्डर लगेगी ही नहीं और फिर भारत डिप्लोमेटिकली ये इश्यू सॉल्व कर सकता है। आप क्या सोचते हैं, भारत और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपना सकता है पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए? जम्मू कश्मीर में और कौन से अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप। Oh, okay. That ended very, 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 very suddenly. Okay. Great video, fantastic video. Finno makes fantastic videos. The Graphic Earth channel makes fantastic videos. Absolutely love it. It was a very, very good video, very informative video, very visually pleasing video. Yeah, I don't know. It's contentious, right? And like, I don't know enough to give an answer to it. Like I said, like buy them out. It's weird to say, hey, I want to buy my territory back and buy my own territory, but like buy them out. But maybe that's just like the American in me. Like we could buy everything. We're gonna buy Greenland. We're gonna buy Mexico. um, hmm, hmm. I don't know. Hey, look, Indiana Pixels commented on here. Quality, keep it going, brother. Rocket it up or something. I don't know. He must have used an iPhone. I'm assuming I think that's what that means. That square means is there's an iPhone emoji that I'm not seeing. Superb video. Not many sources give the exact area not under Indian administration. One has to calculate the using area of POK Aksai Chin. Your video gives that clearly. Also a percentage, which is easier to visualize. It is less area than it appears on the map because of the map distortion. Also good to know. Yeah. We're going to read the comments now. We're going to read the comments and see what everyone else has to say about the video. I'm still trying to think about like what would a possible solution look like? Because war is the war. You wouldn't want war over it. I mean, there's already been war, but like with even more advanced modern technology, more nuclear weapon capabilities, like it wouldn't be good for the people. Summary of this video. Oh, it's not translated. Brother, are you going into hibernation for 3 months? It's because he like releases a video like every 3 to 4 months. That's right. From now onwards, a regular upload schedule has been made. Hopefully, new videos will come soon. Of course, all of this territory, along with more, will become parts of Bharat. But for that, we will have to grow both economically and militarily. For Bharat, it will be wise to not engage in any major military conflicts for the next 20 to 25 years, because we are exactly where China was 25 years ago. We are on the cusp of unprecedented growth and development. This is why we must grow, and we all Indians need to help Bharat grow by being excellent in STEM fields and starting companies which excel in those fields and are best worldwide. Together, let's pledge to give whatever we have to our nation. Jai Bharat. Jai Hind. Jai Hind, right, is also a chant for that too. You're back after 3 months. I was waiting for your videos. Thank you so very much. The tea was fantastic. What if China and PAC preparing for a two-front war on India to capture JK and Arunachal Pradesh? And if China have CPEC project on disputed territory, then it's a clear indication that they are ready for war. And UN in 1947 changed border according to ceasefire positions, but in 1965 maintained border, same like before war. That's beyond science. Hey, Zappy. Look, Zappy's here. Zappy has been a long time commenter on the channel. Zappy also runs
a geoguessing channel. I highly recommend it. Very good. Here's Zappy right here. It's been about a month since they last uploaded. Go give Zappy some love, guys. Go give Zappy some love. When the Graphic Earth uploads, it makes my day. Keep going, brother. You are my favorite content creator. Thank you so much for the compliment. We lost our entire neighborhood with our great masterpiece, foreign policy. We are pretending to be superpower hegemony, but in reality, we are delusion. Oof. What is this? Crazy has gone. We should make better relationships. It solves our problems, plus it will grow our economy also. Thank you for the subtitles. I appreciate the extra effort. Yeah, the subtitles in English are pretty cool. You're welcome. Glad you found them helpful. Kashmir is our dearest land from Pakistan. It's better for India to forget Kashmir if she wants her survival. Oh, this person is from Pakistan. I see. Kashmir is our dearest land from Pakistan. It's better for India to forget Kashmir if she wants her survival. Never. If you think so, then give me just one answer factually. Why would you give up your claim of Chinese occupied Kashmir after 1962? Also, why you have given a big part of Kashmiri land to China as gift? Who else can give a part of land to another nation rather than you? Also, if you think so, why the people of POK are suffering? It is nearly impossible to gain back these areas practically. It's Pakistan, boy. Possible in Bollywood. No, bro. Possible in Bollywood movies. Send that person. He will win against Pakistan in movies. Okay. Very nice video. Consistent quality. Oh, quality 100%. Consistency. Awkward face, but your videos had made me informative. Keep growing. It's because he like it. The videos themselves, like he always puts like the extra effort in the videos. That's why the channel's so good. Thank you so much, brother, for the knowledge. Please make separate video of Bahar. A lot of love. He actually responded to that. Okay, I will try. Dot 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 question mark. What would you like to see about Bahar? Any topic suggestions? I want to see about Mithila, a cultural place of Bahar comprised of 22 districts of Bahar and 6 districts of Jharkhand. I don't know anything about that. High quality content. We are Kashmiri, no Indian, no Pakistani. Your videos give a different kind of knowledge every time. This guy is proud to be Pakistani. Azad Kashmiri. Azad Kashmiri? Yeah, what it was to be not like occupier Indian status. All right. Let's see. Be ready to lose more land, India. Wow, some of the top comments are negative. That's interesting. Be ready to lose more land, India. I'm Kashmiri and I appreciate your efforts, but I just want to say you so-called 3 nuclear powers have illegally occupied my nation, Jammu and Kashmir. There's a okay. I think first solution is applicable, logical, and peaceful. India and Pakistan should admit their occupation and go forward for mutual trade in film, industry, music, drama, science, space, IT, and many more. No, not at all. Not at all. Whole Kashmir is India part. You can't take care of Islamabad. How will you take care of Kashmir? Excellent analysis. Your video is good. Very good analysis. All right, let's go up to see some of the newer comments because there's probably even going to be even more contentious comments in the new comments, right? Okay. Kashmir for Kashmirian, not for India, Pakistan, or China. Oh, look at that. He hearted this video 3 hours ago. Amazing video with tons of great info. Good effort, bro. I just like your video as your future activities because overall Pakistani against the Indians. Okay. The reason is the British Empire. Go on dreaming. Half-baked analysis. Why should India go for two-front war? It can wage war with Pakistan also. Aksai Chin can be omitted or gift to China now. He didn't watch the video at all. He didn't watch the video at all. Be friend with China and fight with Pakistan. China needs Indian business rather than Pakistan liability.
I mean, that is a potential option, right? I don't know. Congress is corrupt. Okay, sure. Indian Dream. Why we are still happy joining India impossible. Indian Dream crying face. In simple words, Kashmir is yours. Live it yourself. I am from Indian occupied Kashmir. Okay. Free these people so they too can progress. Very good analysis. Only option three with support from East Turkestan and Tibet is a solution. Free Tibet, free East Turkestan. I didn't know about I have to look into more about East Turkestan. I don't know too much about that history, right? Excellent analysis. Much love. We should make a better relationship. It solves our problems, plus it will grow our economy. Also, Jammu and Kashmir plus Ladakh solely are part of Pakistan. Wow. Pakistan says comprise has been done because of which ALG problem is there. Word salad. I don't know what that. I don't know. Pakistan Zindabad, Kashmir Zindabad, Pak Army Zindabad, Pakistan Zindabad, Pack. All right, sure. Tea was fantastic, don't you think so? Um, we're just looking through. Love the quality content, informative. Level your content. First time on your channel, and I've subscribed. You're a big idiot. You are big idiot. That's why you are calling them Azad Kashmir. One day free Jammu Kashmir states. India has only two major opponent countries boundaries, but China has surrounded by 14 countries, including India. Okay. Okay. Indian politicians are cowards. Congress party was worse. Got country. They have to put in country in gutter. U.S. is not ally of India. Yeah, we are. Free Palestine. Wow. The Palestinian movement is being pushed here as well. You know who I haven't seen, though? You know who I haven't seen? No Drew Rothy. No Drew Rothy comments. No German Shepherd comments. Nothing yet, anyways. Let's load some comments. Let's load some comments. I bet you. I bet you if we load enough comments and we do a search, he's gonna show up. He's gonna show up. He's gonna show up. I can already feel it. We're gonna load a bunch of comments. Let's see, that's gonna be good enough, all right? Then we do Control F, and then we do German. Oh. German? No German? Oh, I spelled it wrong. No German. Okay. What about Droove? I don't know how you spell Droove. Hey, look at that. Okay, he didn't show up this video, and yet I still talked about him. I'm the one that brought him up this time. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Anyways, guys. I don't know. Subscribe to him on this channel. This is my I watch these videos on my not on my my reaction channel. I watch these videos on my Guinea Pig channel. Because my Guinea Pig channel, I don't know, that's just the one that I do everything on. My main channel, I guess you could say. I don't know. I was subscribed. I'm usually not subscribed to any content like any of these contents on this main channel. So that's actually really surprising. Okay. Well, anyways, thank you for watching, everyone. If you liked it, please leave a like, comment, subscribe. If you haven't subscribed, go check out Finnell's video. Go check out Finnell's channel, The Graphic Earth. Go check out Zappy as well. Right here. Again, he's always been a long time follower of the channel from the very beginning. Like literally from the very, very beginning. He's been around. And you know what? I'm not subscribed to him on this channel. I am subscribed to him on my geoguessing channel and my reaction channel. But I'll subscribe to him on this channel as well. I apologize for that. I didn't realize I wasn't subscribed on this channel, my friend. But now I am, so there we are. Go subscribe to both of those channels. Subscribe to my channel. Subscribe to my other channels. Subscribe to your favorite YouTuber. Go out, subscribe to your favorite YouTuber if you haven't subscribed already, right? Anyways, thank you for watching. I'm going to go ahead and go now. Take care. Goodbye.